हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे IBPS 2025 की जो रिक्रूटमेंट है स्केल 2 और 3 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर, उसके लिए प्रोफेशनल नॉलेज का टॉपिक 5 ट्रांजैक्शन एंड रिकवरी इन DBMS के एमसीक्यूज यहाँ पे अपन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसके पहले अपन ने की पॉइंट प्लस एमसीक्यूज कवर किए थे, वो भी सभी वीडियोज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग से अगर देखेंगे तो सभी वीडियोज अवेलेबल है। प्लस यहाँ पे अपन ने जो सीरीज स्टार्ट की है एमसीक्यूज की, तो उसका 5th टॉपिक आज अपन कवर कर रहे हैं। और ये जो सीरीज है ये टिल एग्जाम तक जो है वो स्टार्ट रहेगी, इसलिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए। वैसे देखे, आरआरबी के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की प्रोफेशनल नॉलेज की पीडीएफ भी अवेलेबल है। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगी व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पीडीएफ है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे ट्रांजैक्शन एंड रिकवरी इन डीबीएमएस की कुछ एमसीक्यूज। तो देखिए, फर्स्ट है, which property of transaction ensure that either all operation are perform or none are? तो देखिए ऑप्शन है कंसिस्टेंसी, ऑटोमेसिटी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, ऑटोमेसिटी, बिकॉज ऑटोमेसिटी guarantee that transaction is indivisible, that is partially executed is not allowed. Next, second, the asset property that ensure database remain is valid state after a transaction is. देखो ऑप्शन है फर्स्ट, ऑटोमेसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, कंसिस्टेंसी, बिकॉज कंसिस्टेंसी ensure integrity constraint are maintained before or and after a transaction. Next, third, which of the following ensure that concurrent transaction do not interfere with each other? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, ऑटोमेसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। तो करेक्ट आंसर है थर्ड, आइसोलेशन, बिकॉज आइसोलेशन ensure transaction appear to execute sequentially, preventing interference. Next, fourth, which type of schedule allows concurrent transaction but preserve consistency? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, सीरियल शेड्यूल, सेकंड नॉन सीरियल शेड्यूल, थर्ड कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल एंड फोर्थ डेडलॉक शेड्यूल। तो करेक्ट आंसर है थर्ड, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल, बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल आर नॉन सीरियल शेड्यूल दैट कैन बी ट्रांसफॉर्म into a serial schedule without violating consistency. नेक्स्ट, फिफ्थ, व्हाट हैपन्स व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज अबॉर्टेड? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, ऑल चेंजेस आर कमिटेड, सेकंड पार्टिशियली चेंज मेन रिमेन्स, थर्ड ऑल चेंजेस आर रोल बैक एंड फोर्थ ट्रांजैक्शन कंटिन्यू। तो करेक्ट आंसर है थर्ड, ऑल चेंजेस आर रोल बैक, बिकॉज रोल बैक ensure the database return to its state before transactional begin. नेक्स्ट, सिक्स्थ, इन deferred update recovery method, ठीक है, व्हाट? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, चेंजेस आर अप्लाइड इमीडिएटली, सेकंड चेंजेस आर अप्लाइड ओनली एट कमिट, थर्ड अंडू इज परफॉर्म बिफोर कमिट एंड फोर्थ रोल बैक इज नॉट पॉसिबल। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, changes are applied only at commit, because deferred update delay changes to database until commit, means simplifying recovery. Next, seventh, which log record is necessary to redo committed transaction after a crash? तो देखो ऑप्शन है undo record, redo record, both undo and redo and checkpoint records only. तो करेक्ट आंसर है सेकंड, redo record. Redo record store changes for committed transactions so they can be reapplied after a crash. नेक्स्ट, एट, चेक पॉइंट आर यूज्ड इन DBMS2। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, इंक्रीज ट्रांजैक्शन स्पीड, सेकंड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वर्क ड्यूरिंग रिकवरी, थर्ड प्रिवेंट डेडलॉक एंड फोर्थ इंक्रीज कॉन्करेंसी। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वर्क ड्यूरिंग रिकवरी, बिकॉज checkpoint record a consistent database state. Recovery can start from the last checkpoint rather than the beginning. नेक्स्ट, नाइन्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज अ डर्टी रीड? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, आइसोलेशन लेवल, दैट इज रीड अनकमिटेड, सेकंड आइसोलेशन लेवल, रीड कमिटेड, रिपीटेबल रीड एंड सीरियलाइजेबल। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, आइसोलेशन लेवल, रीड अनकमिटेड, बिकॉज रीड अनकमिटेड अलाउज रीडिंग अनकमिटेड चेंजेस फ्रॉम अदर ट्रांजैक्शन, दैट इज डर्टी रीड्स। वैसे देखिए, फाइनेंशियल एंड बैंकिंग अवेयरनेस की शॉर्ट नोट प्लस एमसीक्यूज पीडीएफ भी अवेलेबल है।
जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगी व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट 10th, अंडर लॉगिंग रिक्वायर दैट बिफोर अ डेटाबेस आइटम इज मॉडिफाइड। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, इट्स ओल्ड वैल्यू मस्ट बी रिटर्न टू लॉग, सेकंड इट्स न्यू वैल्यू मस्ट बी रिटर्न टू लॉग, थर्ड अ चेक पॉइंट मस्ट एग्जिस्ट एंड फोर्थ ट्रांजैक्शन मस्ट कमिट। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट, its old value must be written log because undo logging ensure old value are stored to roll back changes in case of abort. Next 11, consider two transactions that is T1 and T2. If T1 write X and T2 read X before T1 commit, which problem may occur? ठीक है, if T1 write X and T2 read X before T1 commit, which problem may occur? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, lost update, dirty reads, unrepeatable reads and phantom reads. तो करेक्ट आंसर है सेकंड, dirty read, because reading uncommitted changes, that is dirty reads. Next 12th, which schedule type guarantees serializability by locking atom before accessing them? तो देखो ऑप्शन है टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग, टू फेज लॉकिंग, deferred update and undo logging. तो करेक्ट आंसर है सेकंड, टू फेज लॉकिंग, बिकॉज टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल ensure all locks are acquired before releasing any serializable schedule. Next 13, in the Arias recovery algorithm, what are the three phase executed after a crash? तो देखो ऑप्शन है स्टार्ट एग्जीक्यूट कमिट, सेकंड एनालाइज रीडो अंडू, थर्ड लॉकिंग लॉगिंग कमिटिंग एंड फोर्थ सेव पॉइंट रोल बैक कमिट। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, एनालिसिस रीडो अंडू, बिकॉज Arise perform analysis to find active transaction, redo to apply committed update and undo the rollback uncommitted updates. Okay. Next 14, which of the following problem can occur if two transactions update the same data simultaneously without proper isolation? देखो ऑप्शन है फर्स्ट, lost update, dirty reads, unrepeatable reads and all of the above. आंसर है all of the above, because without isolation lost update, dirty reads and unrepeatable read can all occur. Next 15, which mechanism ensure durability of transaction in DBMS? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, undo logging, सेकंड redo logging, थर्ड check point and fourth commit record. तो करेक्ट आंसर है फोर्थ, commit record, because once a transaction is committed its change are permanent in the database, that is durability is ensured. Okay. वैसे देखिए कंप्यूटर अवेयरनेस, एग्रीकल्चर, अकाउंटेंट, फाइनेंशियल बैंकिंग अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, ट्रेजरी मैनेजर, सभी पीडीएफ्स अवेलेबल है। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगी व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोज आपको मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।